हेलो एवरीवन, मेरा नाम हया फातिमा इकबाल है और मैं हाजिर हूँ आपके लिए फुल ब्राइट वुमेन पॉडकास्ट की एपिसोड के साथ, जिसमें हमारी गेस्ट हैं आज डॉक्टर भविता कुमारी। डॉक्टर भविता's अमेजिंग थिंग जो मुझे तो एक सुपर पावर लग रही है वो ये है कि ये एक बेसिकली एक डबल डॉक्टर है, बिकॉज शी फर्स्ट completed her MBBS from Karachi and then she went to Tulane University to do a PhD in public health। तो मेरा ख्याल है ये एक इल्म का एक सरचश्मा है, जिनसे मैं तो ओवरवेलम हो रही हूँ, सीधी बात है। और डॉक्टर भविता इस वक्त खान यूनिवर्सिटी में रिसर्च कैपेसिटी में काम करती हैं एट द इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल हेल्थ एंड डेवलपमेंट। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू हैव डॉक्टर भविता हेयर बिकॉज ऑफन टाइम्स जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हमारा ताल्लुक या तो डॉक्टरों से पड़ता है या फिर पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट से पड़ता है। बट दिस टाइम वी हैव समवन हु इज लिटरली द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। सो हेलो डॉक्टर बबीता, आपके क्या हाल है? अ बिग 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 वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। Hello, Haya. Thank you so much for inviting me here. It's a pleasure to be at your show. Thank you so much. थैंक यू सो मच। आपने बताया था कि आपने जब MBBS डॉक्टरी पढ़ी, तो आपको कोई शौक नहीं था वो पढ़ने का, आपको कहा गया था कि आपको डॉक्टर बनना है। और ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें पूरी सोसाइटी बहुत सेलिब्रेट करती है अगर एक लड़की डॉक्टर बन रही हो, लेकिन दूसरी तरफ आपको कोई इंटरेस्ट नहीं था एंड यू वर एकिंग टू बी डन विद बीइंग अ डॉक्टर सो दैट यू कुड डू अदर थिंग्स इन लाइफ। प्लीज उसके बारे में बताएं। व्हाट डज इट फील लाइक टू स्टडी समथिंग दैट यू डोंट वांट टू स्टडी? And what does it feel like to be a doctor when you don't want to be one? So the thing is कि in Pakistan बेटा पैदा होता है तो इंजीनियरिंग कर लो, बेटी पैदा होती है तो डॉक्टर बन जाओ. And gladly we siblings were like at the top of the school charts, like top 10 top 5 यही Amazing. रैंकिंग आ रही होती थी. So definitely पेरेंट्स की भी वही एक्सपेक्टेशंस थी. एंड इंजीनियरिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था ना, बिजनेस स्कूल का कोई कॉन्सेप्ट था घर में. यही था कि बेटी है तो, और बिसाइड्स द फैक्ट दैट आई डिडंट देयर वाजंट एनी डॉक्टर, एनी मेल और फीमेल डॉक्टर इन द होल फैमिली. सो ये एक शायद पेरेंट्स पेरेंट्स तो नहीं, माय फादर एक्चुअली ही हैड दिस विश के एक डॉक्टर होना चाहिए. एंड आई रिमेम्बर कि मैट्रिक के बाद आपको फील्ड चूज करनी होती, प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग. I brought this form from the college and my grandmother, मेरी दादी जो थी वो वहीं पे मौजूद थी हमारे घर पे उस वक्त. And I was filling the form और पापा ने ऐसी दादी से पूछा कि क्या करना है. And they were like, डॉक्टर नहीं है घर में, एक तो होना चाहिए, and we believe that you can do that. Mm. That just led to this story. हाँ, So चले इंटर तो हो गया, प्री मेडिकल. अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली ग्रेड्स बहुत अच्छे आए थे oh my God. तो एडमिशन में एडमिशन में इशू नहीं हुआ. हाँ, एंड देन first week of the college, I probably realized, no, I don't want to do it. oh my And there, I God. had friends from, so intermediate से मेरे friends का circle एक ही था, which went throughout the medical college. So they know me go out in and out कि I used to be like, आगे ये नहीं करना है, ये नहीं हो पाएगा. And I think it's only probably due to them कि मैंने वो 5 साल survive किए. They were the Wow. toppers. They were the toppers of the med school. हाँ, So एंड शायद मुझसे भी बड़े जीते थे. योर मेड स्कूल वाज डाउ यूनिवर्सिटी, राइट? तो Yes. मतलब Yes. एक टॉप का भी टॉप जो होता है उसमें आपके दोस्त टॉपर्स हैं। आई एम श्योर आप भी होंगी, आप अंडर प्ले कर रही हैं शायद इस वक्त, बट यू द फैक्ट दैट यू एंटर्ड डाउ इज अ होल अचीवमेंट एज ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि कितना दुनिया का कंपटीशन वहां पे होता है। मतलब एक लाखों लोग अप्लाई करने की ट्राई कर रहे होते हैं टू गेट दोस फ्यू सीट्स, और आप वहां पे पहुंची नहीं है और आपको शौक नहीं है। दिस इज दिस इज अमेजिंग। तो आई रिमेम्बर, मतलब हम एंट्रेंस टेस्ट की भी जब तैयारी कर रहे थे तो माय फ्रेंड्स वर लाइक यार तुम्हारा तो नहीं होगा जिस तरह तुम पढ़ रही हो. एंड देन एंट्रेंस टेस्ट के आप जब बाहर आते हैं तो वी हैव दिस की मिलती है जिसमें आंसर्स होते हैं. एंड आई वाज लाइक यार तुम लोग चेक कर लो, मुझे नहीं पता कितने कर. एंड दे वर लाइक यार एक भी तुम्हारा गलत नहीं आ रहा अभी तक, क्या मसला है. वाह 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 So it was really funny. वाह। I mean, these friends of mine, if they see my podcast, they will definitely laugh over it. How I हाँ, used to be like, medical नहीं करना है, बाकी कुछ भी हो जाएगा. वाह वाह। बट But they were the people who helped me out throughout the 5 years. बट क्लियरली आपके पढ़ने का तरीका कुछ यूनिक है कि आप बज़ाहिर अगर नहीं भी लग रहा कि आप पढ़ रहे हैं तो आपने मतलब आपके आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सही हो रहे हैं किसी टेस्ट में और आपके ग्रेड्स अच्छे आ रहे हैं। सो No. सो डॉक्टर बबीता, यू बिकेम अ डॉक्टर, यू कंप्लीटेड मेड स्कूल।
उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपने प्रैक्टिस की? क्या हुआ नेक्स्ट इन लाइफ? सो ये तो तय था फर्स्ट ईयर से कि आगे प्रैक्टिस तो नहीं हो पाएगी। प्रैक्टिस इन द सेंस के ओके, सो आफ्टर एमबीबीएस हाउस जॉब स्टार्ट हुई। हाउस जॉब स्टार्ट होते ही शादी हो गई। शादी एंड हाउस जॉब वाज गोइंग along together, and then as soon as I finished house job, I was pregnant. So just couldn't manage anything else, like pregnancy. It wasn't really any health issues, but just I just couldn't manage anything else. So I took a break. So वो ब्रेक का जो पीरियड था 8-9 महीने 10 महीनों का, दैट वाज लाइक वेरी फ्रस्ट्रेटिंग कि आप इतना पढ़ के आप कराची की टॉप स्कूल्स में जाएं, टॉप कॉलेजेस में जाएं, देन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एंड देन पीपल आर जस्ट लाइक लुकिंग डाउन अपॉन यू. So that frustration all like gathered and was gathering into like the brain and all. Something wrong was happening there. So जैसे ही I got out of my like postpartum time phase, my mom was the first person who was like, okay, I'm handling your kid and you just need to start back. You cannot just sit at home. This is like getting very depressing. हम्म। वही घर की कहानियां और ये वो sagas and all. So I had to like get out of that. अब problem ये था कि when you're a doctor, it's very difficult to get out of that medical की straight line. The straight line is you do MBBS house job and then you either go for MLEs or you go for FCPS. तो straight line से निकलना issue था. उसमें phase out करने के लिए I started as a medical officer at a very small hospital near my home so that I could manage the family as well. तो हम्म। वो 2 साल रहा और उसके बीच में यही था कि क्या हो सकता है बिसाइड्स क्लिनिकल प्रैक्टिस, इधर मे बी अ शॉर्ट डिप्लोमा, जिससे एक तो ये था कि अंदर से जो 5 साल में भी वही एफर्ट था कि यार आई कैन नॉट डू लाइक समथिंग वेरी क्रिटिकल मेडिसिन जिसमें आई एम द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेविंग समबडीज लाइफ. हम्म। I don't think I can do that. एक ओके। अंदर से, though as a medical officer, I think I was doing a good job. I mean, appreciations थी overall. लेकिन still अंदर से एक feeling थी कि I'm not that lifesaver kind of a person. If there's a critical situation, I'm probably the wrong person to deal with somebody's life. And डायरेक्टली डीलिंग विद that लाइक वन पर्सन्स लाइफ। exactly that guilt was like there कि पता नहीं क्या होगा अगर ऐसी कोई situation में. So I had to get out. I was trying to get out of that. So those 2 years, में एक तो आप जितनी आपकी फिटर्निटी है, it's like okay, you're being a medical officer, you're thinking of out of going from the diverting from the line. So that process is very difficult for people who are thinking about shifting from a clinical career. So even your fraternity, your relatives, your family, the social structure around you, they don't really allow you easily to do that. So राइट। it was a difficult time. लेकिन उन 2 सालों में I was like looking for the options, hoping out, pinning it out, like looking out around, सब कुछ किया. And then suddenly I saw this advertisement from Dow जिन्होंने अपने MPH program launch किया था. So वो advertisement we were just discussing. I was just discussing with my husband, and he happened to call his father, and his father was like the most excited one. He was like, "Yes, go for that. अमेजिंग। That's perfect." Yes. So the background is my father-in-law was a clinician, but working into a public health administration, like with the government departments, but he was working on the public health programs rather than the clinical side of it. So he was the most excited person at that time. और एडमिशन फॉर्म आ गया, सब कुछ आ गया. अब ये था कि ये तो भाई पैसे लगेंगे. हाँ। So we were just like 1 year into marriage, a young couple are just like almost out of the schools. या। तो पैसे कहाँ से आएंगे? तो उसमें डेफिनेटली द पेरेंट्स प्ले their part. तो ये था कि एक सेमेस्टर की फीस ससुराल से आ रही है, एक सेमेस्टर की फीस मैके से आ रही है. हाँ। And that's how the MPH happened. Wow, wow, Yeah. wow. And I want to also like learn a little bit about like I want to also learn a little bit from you. Um, कि अभी जो आपने शुरू में ब्रेक की बात की थी कि आपने पढ़ाई की और फिर हाउस जॉब हो गया और फिर ब्रेक आ गई। वॉक अस अ लिटिल बिट थ्रू दिस ब्रेक डॉक्टर भविता, क्योंकि मुझे अब ये बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंगली लगने लगा है कि पाकिस्तान में ये ब्रेक्स बहुत कॉमन है। दुनिया भर में भी बहुत सी औरतें बहुत ब्रेक्स लेती हैं,
लेकिन यहाँ पे वो ब्रेक लेने की जो नौबत है वो बहुत जल्दी आ जाती है। मतलब स्ट्रक्चर, यानी वैसे हम इतना कम्युनल कल्चर है, वैसे हमारी इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं, हमें बहुत फख्र भी होता है कि हम बहुत मिलजुल के रहने वाले लोग हैं। बट व्हेन इट कम्स टू हाथ बटाना विद अ चाइल्ड फॉर एग्जांपल, ज्यादा लोग नहीं कर रहे होते हाथ बढ़ाने का काम। तो ये जो, इस वजह से ब्रेक जल्दी आ जाती है, राइट? मतलब फौरन से आपको होता है कि आप ब्रेक ही ले सकते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है। इट्स नॉट सम विलफुल ब्रेक दैट अ लॉट ऑफ पीपल टेक, कि नहीं मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ब्रेक लूँ, इट्स लाइक अब यही लेनी पड़ेगी। वॉक अस थ्रू व्हाट दैट ब्रेक फेल्ट लाइक टू यू, इमोशनली, साइकोलॉजिकली। आई वुड बी वेरी hurt personally if my work was snatched away from me, because the system did not support me. How were you feeling in that? So for me, it wasn't actually like, the system compelled me to take the break, at least the first one. It was, so actually during my house job, I just collapsed one day. On the road in the civil hospital, and like people had to get me out. It was my pregnancy. So the thing is that pregnancy, it wasn't really a complicated pregnancy, but somehow I couldn't manage both of my pregnancies, like, but I really respect the people who work like till the last month of their pregnancy. It was just difficult for me personally. So I don't think the break was due to that. It was just a mutual decision between me and my husband. But during the break, I was like, मैंने एक ये break लिया है, उसके अलावा I have taken like another break after my PhD for 3 months. So those breaks are like when people are like, कि you don't have a job, you're not working. For me, it was like this, I mean, why are you not working? Yeah. So that frustration of people being like, uh, I don't know. The feeling is like people just put you down Hmm. if you're taking a break. And that's very, I don't know. I feel like people take break because they don't have enough support, right? Definitely, that's one of the reasons. For example, house job, maybe I remember some of my friends were like breastfeeding their kids in the car at night, but husband लेके आ रहा है और क्योंकि Oh. breastfeeding की space नहीं होती है. And then some of my friends could not work because, except for your mom, there's nobody else who can take care of your kids. Hmm. I hardly see any other support that people get. Joint family ho ya kuch bhi ho. Probably that's the only person who really can take care of your kids. If like she is physically that Healthy. able, Yeah. healthy, age-wise and all that. So Hmm. I don't think there's someone else who can do that. Besides that, breaks are frustrating for people who have achieved so much in life because आपको society look down करती है, definitely anybody, like not only me. कोई भी अगर एमबीबीएस के बाद परसू नहीं कर रहा है ना कुछ तो लोग कहते ही हैं कि you were not getting the opportunities, you wasted a seat, you Hmm. wasted the government's money. इतना सुनने को मिलता ही मिलता. Even I came back to Pakistan after my PhD and I needed that time to settle down, my kids, schools, admissions, घर का देखना था. So I deliberately took that 3 months break and people were like, aren't you getting job offers? It's like, Hmm. I'm not even looking for them. I'm Hmm. just like, I want to take the break. I needed to, like, calm myself after that strenuous period that was PhD takes a toll over your life. So, Absolutely. yeah. मुझे फिर ये बताएं डॉक्टर भविता कि जब आपको इस मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ डिग्री के बारे में पता चला डाउ यूनिवर्सिटी में, तो तो आपने क्या सोचा इसके बारे में? मतलब आपको क्यों ये ज्यादा अट्रैक्टिव लगा? व्हाट मेड इट इंटरेस्टिंग फॉर यू सो दैट यू कुड अप्लाई टू The first thing was getting out of clinical studies. That's yeah, that was like the prime object of like my life at that time. So the thing is, कि first year medical, my friends from college will vouch to that I was like
कि एमबीए करना है आफ्टर एमबीबीएस. इट वाज वेरी ट्रेंडिंग एट दैट टाइम. एमबीए कर लो आफ्टर एमबीबीएस एंड गेट इनटू अ फार्मास्यूटिकल कंपनी. ओह, बहुत अच्छे पैकेजेस पैसे मिलते हैं, मिलते ऑल दैट. सो हैं। एग्जैक्टली. लेकिन फाइनल ईयर तक आते आते वो क्रेज खत्म हो गया था. लाइक रिसेशन टाइम 2008 एंड 9. सो इट वाज कि अब पैकेजेस नहीं है, जॉब्स ही नहीं है. सो वो आइडिया जरा ठप हो गया. एंड देन ऑल्सो द कॉस्ट एसोसिएटेड था कि भाई एमबीए के पैसे कौन देगा, उस वक्त माइंड में चल रहा था. सो एमपीएच wasn't exactly probably one of my plans, but somehow it happened. And my father-in-law, in the sense ke he was in the field, he was working with too many people who were MPH. Donors आते थे आपके पास, NGOs आते थे governments के पास, right? So he was posted in Third Parker. So he had that idea okay, how things work. And I was like, ठीक है, I mean, it looks right, it's good. MPH उससे पहले बकई ऑफ तो ऑफर कर रहा था, लेकिन इतना कॉमन नहीं था जितना अब हो गया है. हम्म। So obviously I didn't have much knowledge on that, but somehow things felt good. So I'm kind of a person who would go with the flow if things sound nice, sound smooth. So I Amazing. was like, okay, yeah, we can do that. How would you explain a 12-year-old about what public health is? What is this field? So okay, clinical is taking care of someone who's already sick, and public health is taking care of people to not get sick. Hmm. Hmm. In simple perspective. So आप जब you're taking care of sick, that is like individuals treatment. And when you are taking care of people to not get sick, you're treating the masses to something. Mhm. That treatment can be just a behavior change, or giving them something which helps them not to get sick or to not get a problem. Like, for example, not get a pregnancy. So introduce contraceptives. Or COVID में, they just needed to wear that mask Hmm. or just to like sit at home. So they had to be educated on that behavior change. Mhm. So ये जो strategies हैं, ये आपके public health specialists बनाते हैं, based on evidence, based on research, and based on what strategy would work for this particular context. तो डॉक्टर बबीता मुझे ये बताएं कि अब भाई वन सेमेस्टर इन लॉज एंड वन सेमेस्टर पेरेंट साइड ऑफ द फैमिली ने फी भी अरेंज कर दी और पब्लिक हेल्थ भी हो गया, राइट? पब्लिक हेल्थ हो गया, जिससे हम होप कर रहे हैं कि शायद आपको वो लाइन, वो जो एक फोर्स्ड लाइन थी कि इसी चीज को फॉलो करना है, डॉक्टर बनना है, वो स्ट्रीक शायद टूट गई हो होपफुली, कि अच्छा भाई अब तो एक और डिग्री भी आ गई है, अब हम कुछ और कर सकते हैं. What did you do next right after completing your master's in public health? Um, and how difficult was it for you to finally break away from doctory? Because I think लोग फिर भी शायद आपको कह रहे होंगे तुम क्या, वैसे तो तुम डॉक्टर हो, तो ये जो तुमने सब किया है ये पता नहीं क्यों किया है. अच्छा नहीं, आई एम सो ग्लैड कि दैट वहां तक सिचुएशन गई नहीं. डिग्री कंप्लीट नहीं हुई थी एंड आई स्टार्टेड वर्किंग. सो थर्ड हाँ. सेमेस्टर के एंड में आई जस्ट अप्लाइड टू जनासन मेडिकल यूनिवर्सिटी. वहां पे पोजीशंस आई हुई थी एंड एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू द वीसी आस्क्ड मी कि ज्वाइनिंग कब करनी है. तो मैंने थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम्स हो जाए उसके बाद. एंड ही वाज सो काइंड, ही वाज लाइक okay, just sit here and give the exams. We will arrange a table for you to study. So that was like I joined the university as a lecturer हम्म. 1 month before my exams. So ओह. वहीं पे बैठ के पढ़ रहे होते थे और वहीं फिर वो एग्जाम्स की लीव्स मिल जाती थी. And अमेजिंग. after third semester, there was more support from my direct supervisor, Dr. Lubna Beg, and so they and so वो thesis का सारा जो 1 साल था वो भी वहीं से किया. हम्म. And by the time I graduated, I think everybody knew I was into public health already. Mm-hmm. My question to you is, okay, so you started teaching. Um, then how did you figure out that you had to do a PhD? क्योंकि अब तो आप पढ़ा रही थी, आपको वो एक शिफ्ट भी मिल गया था नेसेसरी करियर के लिए, and you had just done another master's like after completing your MBBS. So what made you decide कि अब PhD अप्लाई करने का टाइम आ गया है? और
आपको क्या जरूरत पड़ी उसकी, एक्चुअली दैट्स व्हाट आई वांट टू लर्न। उस वक्त आई थिंक उस वक्त जरूरत से ज्यादा आई वाज जस्ट गोइंग विद द फ्लो एंड आप somehow I think I had good uh, good influence at that time, I would say. Ki my colleagues were applying for PhD or looking for that opportunity. और उसी के बीच में I think the biggest motivation was probably USFP का. There's USFP की scheme, which is they take mock GREs, and then if you score good, they give you a free voucher. I think that was the biggest support. हम्म। I'm just so glad to just like just so grateful to them for making this opportunity. क्योंकि बहुत कि महंगा है जीआरई देना, और ये हर बहुत किसी महंगा के है। लिए पॉसिबल नहीं एग्जैक्टली होता। जब आपकी आपकी अपनी सैलरी 50,000 के अंदर हो और आप 20,000 जीआरई पे लगा रहे हो, व्हेन यू हैव अ फैमिली एज वेल, इट्स डिफिकल्ट। आई नो इट्स डिफिकल्ट फॉर मेनी पीपल। सो वो जो आप पब्लिक सेक्टर की जो इन्होंने इंट्रोड्यूस की हुई है कि दे गिव वाउचर्स टू पब्लिक सेक्टर फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स, I think that does wonders to many people, या। and many people that I know personally are very grateful to that. So वो वाउचर आया, जीआरई दिया, फुलब्राइट अप्लाई किया, एंड लिटरली इट वाजंट अबाउट पीएचडी, इट वाज अबाउट कि फुलब्राइट अप्लाई करना है. Probably it wasn't PhD. It was somewhere I wanted to prove myself further with a PhD. No, sorry, with a Fulbright. हम्म। कि अगर Fulbright मिल गया, then you are like proving yourself again. वो जो नॉन कन्वेंशनल फील्ड चूज की है, फिर आप टीचिंग में गए हैं, वो सबको अगर एक चीज आपको मिल जाए ना जिससे आप अपना यू कैन जस्ट मेक एवरीबडी शट अप. हम्म। हम्म। So that was probably the aim, and not exactly PhD. So Fulbright apply किया एक साल. तो जीआरई देने और फुलब्राइट की डेडलाइन में हार्डली कोई 2 हफ्ते थे जिसमें सारा असेंबल की थी उफ। एप्लीकेशन. तो उस पे भी इंटरव्यू कॉल आ गई. आई वाज जस्ट हैप्पी कि इंटरव्यू कॉल आ सकती है, इतनी हैपहेजर्डली पुट अप एप्लीकेशन पे इंटरव्यू कॉल आ गई, लेकिन सिलेक्ट नहीं हुई क्योंकि इंटरव्यू बहुत ही वेंट लाइक I was not crying, but I was almost there. ओ Okay, रियली। interview went like, um, I just couldn't prove myself probably. Then things like that happened. Okay, I probably couldn't justify my application in the हम्म। sense कि why should Fulbright pay for my PhD? राइट। That was the prime question. हाँ। So things happened. वापस आई, कोई बात नहीं. My mentors were great. My mentors were very supporting at that time. And second year, लेकिन ये हुआ कि उसके बीच में आई गॉट इनटू डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स. क्योंकि ग्रेजुएशन हो गई थी, तो फिर ये था कि यार ग्रेजुएशन पे इतना खर्चा किया है तो अब इस सैलरी में तो देयर इज नो पॉइंट स्टेइंग हियर. सो एनजीओस में अप्लाई करना स्टार्ट किया, एंड दिस अपॉर्चुनिटी केम आउट जिसमें डबल ऑलमोस्ट ट्रिपल सैलरी थी, हम्म। and got into that. और उस नई जॉब, एंड अगेन द डेडलाइन ऑफ फुलब्राइट कम्स इन, तो अब टाइम नहीं था, तो जस्ट पुट इन द सेम एप्लीकेशन. इस पे इंटरव्यू कॉल आई है तो ठीक है, लेट द सेम एप्लीकेशन बी देयर. जस्ट एडेड द टर्म कि आई एम नाउ वर्किंग एट डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और भेज दी. फिर दोबारा कॉल आ गई, एंड दिस टाइम लाइक ओके, I knew the answer to the questions that I failed to answer last time. I knew why Fulbright should pay for my studies. But the interview went into completely opposite direction. They were just interested in what I'm doing at Doctors Without Borders. So हम्म। the interview was mostly about that only, and plus my master's dissertation, which was now complete and done. राइट। So I remember coming out of the interview room, and people who were sitting in the hall, and now some of them are very good friends, and one of them was like, I could see the glow on your face, and I was so scared to see that. Yeah, so या समटाइम्स यू आर स्केर्ड टू the सी द ग्लो ऑन अदर पीपल्स फेस, आपको होता है कि शिट इनका शायद बहुत अच्छा yeah, हो गया इंटरव्यू। exactly. But it was so visible. I don't know how. I mean, the first time I was literally crying, and this time there was a glow, and I was very sure that okay, I'm getting it anyhow. अमेजिंग। And yes, the journey happened. आई वुड लव टू नो कि डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स में आप क्या काम कर रही थी। पाकिस्तान में उस वक्त उनके क्या काम थे, स्पेसिफिकली किस तरह के टास्क्स में या प्रोजेक्ट्स में वो इन्वॉल्व थे।
सो डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की इस वक्त अच्छा, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के तीन हेडक्वार्टर्स हैं, एम्स्टर्डम, पेरिस एंड ब्रसल्स. सो आई वाज वर्किंग विद ए बेल्जियम पार्टनर, और बेल्जियम का कराची में प्रोजेक्ट चल रहा था. उनके और भी प्रोजेक्ट्स हैं थ्रू आउट पाकिस्तान, लेकिन जो बेल्जियम का प्रोजेक्ट है वो सिर्फ कराची में चल रहा था. जिस इट वाज अ primary healthcare unit and a OBGY unit at that time, and a small HCV, hepatitis C की क्लिनिक, जो अब तो काफी बढ़ गई है आई गेस. उस मेडिकल डिपार्टमेंट की आई वाज वर्किंग एज द assistant manager, which was assistant manager had to be a local person, and the manager was supposed to be an expatriate. So अगर इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि जब मैंने ज्वाइन किया तो एक्सपैट्रिएट को वीजा के इश्यूज थे उस वक्त. सम पॉलिसीज हैड चेंज ड्यू टू अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड यूएस के जो भी इश्यूज होते हैं. So expatriate visas were having difficulty. So I was actually substituting her as well. So मैंने 1.5 साल काम की, जिसमें more than 6 to 7 months I was working as the manager only for the I see. department. I see. And I was substituting pretty much the medical expatriates जितने भी वहाँ पे 3-4 होते हैं normally. So I had to, at one time I was substituting everybody, so filling in position. So उसमें आपकी duties के starting from of course the healthcare staff की जो भी schedules होती हैं, उनकी जो भी grievances हैं, प्लस में आपकी जो इक्विपमेंट्स, आपके स्टॉक्स एंड ऑल दैट, एंड प्लस आपकी ट्रेनिंग्स एंड ऑल. सो इट वाज प्रीटी मच लाइक मैनेजिंग अ मेडिकल डिपार्टमेंट. अगर कहीं और भी कहें तो मेडिकल डिपार्टमेंट की जो मैनेजमेंट होती है ऑलमोस्ट वही थी वहाँ पे. Right. And what did you learn more about public health and practicing public health in Pakistan through that particular job? सो आई थिंक क्योंकि क्लिनिक थी, सो प्रॉब्ली, एंड क्लिनिक कहाँ पे थी? इन मारीपुर. Mm. So I think the biggest learning probably would be to how to serve the community in the right places. Wow. And this was the first job जो मैंने इस setting में की थी. इससे पहले तो you're working in civil hospital in a very protected environment. You're not dealing with the communities directly. आपको अगर पेशेंट इशू भी कर रहा है तो आपका सिक्योरिटी स्टाफ आ जाता है. वहां पे भी नो डाउट सिक्योरिटी स्टाफ था, सब कुछ था हमारे पास, लेकिन somehow you were in their area and not in your area. That matters a lot. कि आप सिविल में शेर हैं, वहां पे आप हाँ. कि अपनी क्लिनिक जरूर है, लेकिन आप वहां पे उनके एरिया में बैठे हुए हैं जहाँ पे वो करता धरता है. So I think the biggest learning is how to respect communities and while working with them in their Right. community. Civil में जब patient आता है ना, तो he's more intimidated by us. Yeah. 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 In fact, I think so many people have these rather terrible experiences कि भाई कोई बात ही नहीं करता सही से और सबको लगता है कि अपने ही गुरूर में सब जो है वो चल रहे होते हैं. Probably not Yeah, everyone, लेकिन it's a very common thing कि the way you look dictates how people will talk to you. If I went there, people will talk to me somewhat nicely, but if I look like I did not have enough resources or I was poor, तो टोन ही बदल जाती है और आप से तुम के yeah, बजाय मतलब आप से yeah. तुम पे आ जाते हैं लोग. तो so that's amazing that you learned how to be in a community and not to see as a community as a threat also, right? To see them as partners के भाई इनके No, साथ and then when you करना work with चाहिए. expatriates, that was my first time working with expatriates. Mhm. So I think that laid the ground for my PhD as well. कि एक एक बीच में ना एक स्पेस होती है कि नहीं, गोरे इस तरह करते हैं, गोरे इस तरह का काम है, जी. बट यू लर्न, द फर्स्ट थिंग दैट यू लर्न फ्रॉम देम इज प्रॉब्ली रिस्पेक्टिंग योर वर्क एंड उनकी एथिकल जो बाउंड्रीज होती हैं. दे दे हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर पीपल they work with, Hmm. and they also respect the cultural values a lot better than us. आई थिंक कि हम अगर किसी रूरल एरिया में जा रहे होंगे तो हम अपने ही एक ड्रेस कोड के साथ जा रहे होंगे, अपनी टोन के साथ जा रहे होंगे. एंड while working with them I realized they adapt to their tone and their dressing to the local culture that they are working with. A lot of it. I mean, अगर मेरा ऑफिस डिफेंस में था और मेरी क्लिनिकल सेटिंग हमारीपुर में थी, they could adapt to both settings.
Hmm. They saw the difference, they adapted to it. I don't think it's very common for our community probably, और द पीपल हु लाइक हम जैसे लोग जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारे लिए शायद इतना आसान नहीं है इस तरह कल्चरली अडेप्ट करना व्हेन यू आर इन द रूरल सेटिंग द वे दे डू इट. So that laid the foundation for me, and that laid the ground. And then I think I could respect my PhD faculty and people peers more because of this experience, because I had seen the same people working with me on grounds, जो Hmm. बाद में मुझे यूनिवर्सिटी में भी उसी तरह Hmm. का environment मिला. So that was very helpful for me. What happens in your life when you get the PhD, you get that letter, suddenly you have this long-term commitment in front of you. Uh, you are a mom by now, uh, and you're working two jobs. You're teaching and you're continuing to work at Doctors Without Borders. उसके बाद I क्या was हुआ? almost done with teaching. I was a visiting faculty by then. Yeah. So वो तो ठीक, I mean, just going okay, but yeah, with having a child, yes, that's a difficult part, because uh, when I started teaching, as I said कि मेरी मास्टर्स की डिसर्टेशन भी चल रही थी और बच्चा भी, तो एट दैट टाइम उस वक्त मैंने स्टार्ट किया था लेट नाइट काम करना, because otherwise three things were not possible. There were three jobs ongoing, Yeah. three Three jobs full-time आपके jobs. मास्टर्स का. Exactly. So उस वक्त I started कि every night late sittings हो रही थी Hmm. when the child was sleeping. So uh, that was a good exercise for me to build that rigor, to build that work hard wali strategies. PhD मिलना was like, okay, आप उस वक्त बहुत एक्साइटेड होते हैं, उस Hmm. वक्त आप नहीं सोचते कि आगे क्या हो रहा है. अगर आपकी फैमिली जा सकती है, विच इज द बेस्ट थिंग अबाउट फुलब्राइट, यू कैन टेक योर फैमिली अलोंग. Hmm. और फैमिली ले जाने के बाद उसका ज्यादा अच्छा पार्ट ये कि अगर स्पाउस साथ चल रहा है तो स्पाउस गेट्स द वर्क परमिट, Okay. अनलाइक NF वीजा Hmm. जिसमें स्पाउस कैन नॉट वर्क. सो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आते हैं, लोग स्पाउसेस नहीं लेके जाते हैं. सो विद द एक्सचेंज वीजा ऑन फुलब्राइट, यू कैन द स्पाउस कैन वर्क. सो वो तो बड़ी एक्साइटमेंट थी कि दोनों मतलब दोनों तरफ से फाइनेंशियली देयर वोंट बी अ प्रॉब्लम, Right. एंड द किड विल बी स्टडीइंग इन द US एंड ऑल दैट. वो आई डोंट थिंक कि उस सिचुएशन में हम में से कोई भी डरा हुआ था. सब Right. बहुत एक्साइटेड थे, Right. ऑलमोस्ट बहुत Amazing. एक्साइटेड थे. Amazing. Yeah, yeah. And then I'm not sure if people would like it or not, लेकिन जो US की PhD है वो 2 साल कोर्स वर्क होता है इनिशियली, Hmm. एंड यूरोप की जो PhD थी वो डायरेक्टली, ऑलमोस्ट डायरेक्टली, थोड़ा बहुत 5-6 महीने के कोर्सेज के बाद आपकी रिसर्च स्टार्ट हो जाती है. तो वो जो 2 साल का आपका टाइम पीरियड होता है ना, दैट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज टू build up your skills, build up the research mentality. Mm-hmm. आपका माइंड सेट, वो लैंडस्केप, आप उस लैंडस्केप में फिट होने के लिए ट्रांजिशन पीरियड आपको बहुत अच्छा मिल जाता है. सो आई वुड से इट वाज क्वाइट स्मूथ गेटिंग इनटू दैट फेज. So I want to know what the new world was like. What state did you go in? How was it different from life in Karachi? Tell us all about the human side of the experience. The human side of it was that it was, if not 100%, 90% very similar to Karachi in terms Really? of, yes, in terms of weather, almost same, except for they had rain and hurricane, which Karachi is like less experiencing. लेकिन यहाँ Thankfully, पे भी अगर yeah. बारिश आती है तो फ्लैश फ्लड्स तो आ ही जाते हैं, Right. लेकिन वहां पे ये ज्यादा था. Up Other than Louisiana, that, I think, right? yes, Yeah. very south, very Hmm. Hmm. completely south of America, Hmm. south of the United States of Right. America. So Right. it was very similar. Second comes to क्योंकि हम कराची वाले हैं, तो obviously we have to talk about the crime ratios. Again, very much similar. वहाँ पे भी it's New Orleans. I Hmm. was in New Orleans, and nobody can deny कि वहाँ पे crime rate कम है. I don't think any of the people will like hate me for saying this, but yes, definitely वहाँ पे crime rate था. सही तो घर तो जैसी बात लगी ये अच्छी, आपको अपना अपना लगा एग्जैक्टली वहां पे भी यही था कि यू हैव टू, एंड बिसाइड्स आप जब कराची से हैं, तो आप ऑलरेडी एक गार्डेड पोजीशन में होते ही एग्जैक्टली होते हैं. हाँ पीपल फ्रॉम इस्लामाबाद
विल नो द डिफरेंस कि हम यहाँ पे फोन को ना बिल्कुल नीचे बैग के अंदर रखते हैं, रास्ते में नहीं निकालते हैं। तो वहां पे भी यही था कि वहां पे, लेकिन ये था कि दिन दिन वाज यूजली क्लीन। सही। आपको वहां पे नेबरहुड्स ब्लॉक्स पता होते हैं, पता चलने चाहिए वो। पीपल हेल्प हेल्प मी कि अच्छा, चेक दिस सॉफ्टवेयर कि यहाँ पे ये वाले क्राइम एरियाज, ये नेबरहुड्स आपने रात में अवॉइड करने हैं। सो प्रीटी मच ऑन दैट। सो वो हो गया। उसके अलावा लोग ऑलमोस्ट यहाँ के जैसे थे कि people who go to the northern states of the United States of America will see the difference जब वो साउथ में आते हैं। जी। सदर्न पीपल आर वेरी फ्रेंडली, वेरी लाइक बिल्कुल आपको घर तक ले आएंगे। इस तरह के लोग हैं, आपको कराची की याद नहीं आएगी। ओह। हाँ। They हाँ, are सदर्न very, very हॉस्पिटैलिटी तो friendly. ऑब्वियसली मशहूर The है तो। southern hospitality, yes, truly, truly that. I mean, I was in the driving license office and I had forgotten some papers at home, or मेरे पास soft copies थी. I asked the lady to, can I get the printout? She said, no, you have to go to the home office depot office to print it, which was like 2 kilometers away. तो मैंने कहा, एक तो मैं 12 किलोमीटर बस में आई हूँ, and now I have to go again for a 2 kilometer. I went out. I went to there was this state agent office right opposite to that driving हाँ। license key office, and I asked them like, which bus will go to the office depot? And they were like, oh, this one and that. And what do you need? I said, I just need 2 prints. And they were so kind कि ये लो यार, 2 print तो हम करके दे देते हैं. हाँ। I हाँ, don't think I don't ये think तो the कोई people in the नॉर्थ north ईस्ट will में तो experience ये कुछ नहीं that. होता, कोई सीन नहीं है। नहीं. So yes, very, very, very हाँ, supportive तो दैट इज people नाइस around your अब। हाँ, faculty. बहुत सपोर्टिव कम्युनिटीज थी वहां पे, तो आई थिंक कि कराची जैसा ही माहौल मिला अमेजिंग, ऑलमोस्ट. दैट्स वंडरफुल, बट ओनली लाइक maybe more walkable and a little bit cleaner, I know. Cleanliness, sometimes yes, हाँ, sometimes yeah, it's a doubt. I mean, it's a mix, but definitely cleaner than Karachi, of cleaner than course. Karachi, I'm sure. Yeah, but Everything is cleaner than Karachi. yeah, yeah, but overall it was like very similar. अगर शायद नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में होते तो बहुत डिफरेंस फील होता. डेफिनेटली, But डेफिनेटली होता, yeah. डेफिनेटली होता। तो 2 साल आपने कोर्स वर्क भी कर लिया, आपका एक अच्छा ट्रांजिशन भी हो गया कि अगर आपको कोई चीजें नहीं आती थी तो आपने उस टाइम पे सीख ली, सो यू बिल्ट अ बेटर बेसिस फॉर योर रिसर्च एंड स्टफ, Mhm. एंड यू लर्न ऑल द टूल्स। अब आप ये बताएं डॉक्टर बबीता कि आपका जो पीएचडी का टॉपिक था, वो क्या था और आपने आपने क्यों चुना? तो पीएचडी का टॉपिक था, इनिशियली फैमिली प्लानिंग से स्टार्ट हुई थी, फैमिली प्लानिंग इन पाकिस्तान. और वो टॉपिक यहाँ से साथ चला था, कराची से ही. सीइंग, एज अ सेड कि ड्यूरिंग हाउस जॉब से ही ओबीजीवाई वार्ड्स की जो कंडीशन थी, स्टार्ट लाइक द सर्विसेज प्लस द काइंड ऑफ पेशेंट्स दैट वी रिसीव इन पाकिस्तान. सो उससे ही वो था कि यार, जब ये हालात होने तो व्हाई नॉट increase the contraceptive rates in Pakistan हम्म। so that women don't have to die because of that. सो वो एक सोच हाउस जॉब से थी. हाउस जॉब वाज इन 2008. कमिंग टू 2017, 8-9 साल में हाँ, नथिंग हैड चेंज्ड राइट। इन पाकिस्तान. सो वो सोच थी और उसी पे ही आगे काम किया कि कॉन्ट्रासेप्टिव यूज इन पाकिस्तान से लेके फिर वहां पे आगे ख्याल आया कि कॉन्ट्रासेप्टिव यूज सिर्फ नहीं होना चाहिए था, साथ साथ ये भी होना चाहिए कि फर्टिलिटी इंटेंशंस क्या है, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर्स ओवरऑल क्या है. सो बियॉन्ड जस्ट द यूज, कि क्या इट इज it is wished, if the pregnancy is wished by the couple or not. राइट, ओके। सो वो एक छोटे से टॉपिक से स्टार्ट होते होते जो कंप्लीट पिक्चर बनी, वो बात आई रिप्रोडक्टिव बिहेवियर्स इन पाकिस्तान हम्म। थ्रू द लेंस ऑफ वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड डोमेस्टिक वायलेंस. राइट। वो उसमें फर्स्ट पेपर, 3 पेपर अप्रोच होती है. 3 पेपर्स में जो फर्स्ट पेपर से स्टार्ट लिया था कि लेट्स सी हाउ थिंग्स गो फ्रॉम हेयर, वाज जस्ट सेइंग कि does women empowerment lead to increased contraceptive use in Pakistan or no. तो हम्म। उस रिजल्ट की जो प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स आई, उसमें ये आया कि औरत से ज्यादा मर्द की खुसूसियात ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं औरत के फैसले पर, whether she can use contraceptives or not. तो उससे एक और ख्याल आया कि अगर मर्द नहीं इम्पैक्ट करना है तो मर्द और औरत दोनों के
परसेप्शन ऑफ वुमेन्स एम्पावरमेंट देखी जाए कि दोनों किस तरह वुमेन एम्पावरमेंट को परसीव करते हैं, और फिर देखा जाए कि कॉन्ट्रासेप्टिव यूज, फिर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करते करते ये ख्याल है कि वाई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज, वाई नॉट सी इफ द इफ द बर्थ इज इंटेंडेड और नॉट, सो फर्टिलिटी इंटेंशन पे बात आ गई। हम्म। सो फिर सेकेंड पेपर लेड टू कि दोनों का परसेप्शन इज associated with fertility intentions or not। अभी दो पेपर का प्रपोजल फाइनलाइज अभी कुछ हो रहा था, इतने में आ गया कोविड। ओह गॉड, ओके। या हाँ। सो थोड़ा सा डाइवर्ट हाँ। हो गए कि कोविड, जब कोविड आ ही गया है तो ये देख लिया जाए कि जो औरतें पाकिस्तान में खुद को एम्पावर्ड समझती हैं, जो फाइनेंशियली एटलीस्ट फाइनेंशियली खुद मुख्तार हैं, उनके लिए क्या डिफरेंस आया है ड्यूरिंग कोविड। क्योंकि कोविड के साथ साथ अगर आपने सुना होगा कि देर वाज 30% इंक्रीज इन केसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस ठीक। ड्यूरिंग द कोविड लॉकडाउन। बिल्कुल। तो ये ख्याल आया कि जो औरतें पहले काम कर रही थी और उनका अभी काम रुक गया है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस खत्म हो गई है, उनके लिए क्या डोमेस्टिक वायलेंस इंक्रीज हो रहा है। तो ये तीसरा प्रपोजल था, जो कि आईआरबी होते होते और जो रिसर्च का जितना प्रपोजल एक्सेप्टेंस का प्रोसीजर है वो खत्म हुआ, तब तक कोविड तो चला गया था। कोविड चला तो नहीं गया था, लेकिन पाकिस्तान में उसके बाद लॉकडाउन नहीं हुआ। हम्म। लेकिन वो बहरहाल हमने क्वालिटेटिव स्टडीज के थ्रू कराची में जो हमारे घरों में काम करती हैं डोमेस्टिक हेल्प, जिनको हम मेड्स कहते हैं, उनकी कहानियां एक्सप्लोर की कि हम्म। जब वो कोविड के 6 या 7 हफ्ते काम नहीं कर रही थी, उनके लिए घरों में क्या एक्सपीरियंसेस रहे। तो हम्म। ये थर्ड पेपर था। आई इस सी। सबको हमने लिंक किया अंडर रिप्रोडक्टिव बिहेवियर्स, वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड पार्टनर वायलेंस के साथ। आई सी। मुझे आप ये बताएं कि जब आप पहले अपने सेकंड पेपर की बात करी थी कि परसेप्शंस के, मर्द की परसेप्शन अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट और औरतों की अपनी परसेप्शन अबाउट देयर ओन एम्पावरमेंट, वो आपने, मतलब आपने जो रिसर्च की वो किस तरह की, what's the term for it, I'm forgetting, like what was your sample, like किन किन लोगों से आपने बात की उस रिसर्च के लिए? So that is actually secondary data. So the ओके। data had already been collected. Data is collected like every 5 to 6 years, funded by the USAID agency only. But उसको इस लेंस से देखना, ये शायद इतना बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं किया गया। डेटा ऑलरेडी है, लेकिन डेटा तो बहुत है हमारे पास। इट्स जस्ट दैट हाउ वी treat that रीड। data to get some good quality evidence. तो ये जो परसेप्शन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन द आईज ऑफ मेन वर्सेस इन द आईज ऑफ वुमेन, ये जो पेपर था, इसके इसकी किस तरह की फाइंडिंग्स आपको मिली? तो इस पेपर में भी यही फाइंडिंग आई कि जब मर्द को लगता है ना कि औरत खुद मुख्तार है, तब फैसले औरत के हाथ में होते हैं, रादर देन अगर एक औरत खुद को खुद मुख्तार समझ रही है। तो ज्यादातर फाइंडिंग्स यही थी कि जिन मर्दों के ख्यालात ये थे कि और उनकी वाइफ्स खुद मुख्तार हैं, उन घरों में फर्टिलिटी इंटेंशंस वर टुवर्ड्स बर्थ स्पेसिंग, टुवर्ड्स लाइक नॉट हैविंग अनदर चाइल्ड। अक्सर आपने सुना होगा कि बहुत कॉमन आजकल ये चल रहा होता है, मोहब्बत नहीं थी लेकिन 7 बच्चे हो गए। और हम्म। औरत की मोहब्बत तो थी नहीं, यही तो मसला है। मोहब्बत होती तो शायद स्पाउसल कम्युनिकेशन होता हम्म। ऑन रिप्रोडक्टिव चॉइसेस। हम्म। हमारे यहाँ मसला ही सारा ये है कि बर्थ स्पेसिंग में स्पाउसल कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन इसलिए नहीं है क्योंकि आप जो हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है, द कपल डायनामिक्स, उसको हम तरजीह नहीं देते हैं। शादी हो गई तब तक वो शादी के बाद भी जॉइंट में रह रहे हैं, एवरीबडी, सारी जिम्मेदारियां हैं जो बीवी, और सिर्फ अपने बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी फैमिली की भी जिम्मेदारी है। उसके बाद कमाने की जिम्मेदारी आ गई, बच्चे हो गए तो बच्चों को पालना, बच्चों की तरबियत, पढ़ाई, सब वो जिम्मेदारी होगी। तो जो स्पाउसल कम्युनिकेशन का जो एलिमेंट है वो रह जाता है। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव ऑफ कॉन्ट्रसेप्टिव। एंड लाइक स्पेशली अगर आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हो या आपका ताल्लुक उनसे ज्यादा हो, तो everyone has a say on the woman's body except for maybe the woman herself. डेफिनेटली, Everyone tells you कि आपको क्या, डेफिनेटली, इस वक्त आपको क्या कर रहे होना चाहिए अपनी बॉडी के साथ। बिल्कुल, uh, बिल्कुल।
और मुझे तो बिल्कुल। ये भी बहुत बात लगती है वैसे, यानी ये तो एक कॉमन डे ऑब्जर्वेशन है, ये मेरी रिसर्च बिल्कुल भी नहीं है, कि अम, जिनके बच्चे नहीं होते या कम होते हैं या ज्यादा स्पेस के साथ होते हैं, उनको बार बार ये कहा जाता है और कर लो और कर लो, सेट पूरा कर लो। ये तक मैंने सुना है। आई डोंट नो इफ यू हर्ड दोस थिंग्स और नॉट, बट आई हर्ड दीज थिंग्स के मेक इट द परफेक्ट स्क्वायर, कि अगर किसी के तीन बच्चे हैं, कोई दो लड़के हैं एक लड़की, तो कि परफेक्ट स्क्वायर बना लो, एक और बेटी। मतलब लगता है कि किस तरह की मैथ चल रही है तुम्हारे जहन में। बट देन ऑल्सो वी आर ऑल्सो नॉट इनक्रेडिबली काइंड टू वुमेन हु हैव अ लॉट ऑफ किड्स। जैसे ही आप सुनते हैं कि किसी के चौथा पांचवा बच्चा अर्बन स्पेसेस में हो गया है, तो फॉरेन से जब उस आखिरी बच्चे की खबर आती है, लेटेस्ट बच्चे की खबर आती है, तो उस पे भी होता है कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं, इतने बच्चे। तो ये खुश भी कोई नहीं है, किसी एक रिजल्ट से भी खुश नहीं है कि अच्छा भाई दो करने हैं, तीन करने हैं, इतने होंगे तो सबका मुंह बंद हो जाएगा। मुंह नेवर गेट्स बंद। चार नहीं बेटे नहीं। हो जाए तो पांचवी बेटी कर लो, तीन बेटियां हो जाए तब तो एक कौमी फरीजा है कि एक बेटे की हुसूल जो है वो चाहिए। या इट्स सो इट्स सो इन्फ्यूरिएटिंग, आई मीन जस्ट एज एन ऑब्जर्वर ऑल्सो, कि ये क्या सीन है। मैं ये जानना चाहती हूँ डॉक्टर भविता कि ये पीएचडी करना जो इटसेल्फ जो काम है, ये कितनी ख्वारी का काम है, ये आप हमें समझा दें प्लीज। सो सी मेरा जो काम था वो क्योंकि इनिशियली सेकेंडरी डेटा था, और फिर कोविड के बाद जिंदगी आसान हो जाती है आपकी क्योंकि दुनिया वर्चुअल पे आ गई थी। सो इंटरव्यूज वेंट हाफ ऑलमोस्ट वर्चुअल। हम्म। ऑलमोस्ट आपके मेरे वर्चुअल था डेटा कलेक्शन, प्लस सम ऑफ माई डेटा कलेक्टर्स फ्रॉम हेयर, लेकिन वहां से उनसे भी बहुत इजी हो गया था कोविड के बाद। अदरवाइज आपकी अगर प्राइमरी रिसर्च इन द फील्ड है, इफ यू फ्रॉम पब्लिक हेल्थ, सो इट इज cumbersome। आई कैन नॉट से कि हेक्टिक नहीं होती। आप फील्ड में जाते हैं, आप लोगों से मिलते हैं टू गेट टू योर पार्टिसिपेंट्स। सेकेंडली, अगर आप if you're not pursuing a PhD in public health, rather आपकी कोई lab field है, तो you have to spend hours in the labs। आपकी फॉर एग्जांपल बायोलॉजी या फिर इंजीनियरिंग की कोई ऐसी फील्ड है जिसमें आपका जो रिसर्च का काम है वो किसी लेबोरेटरी में होना है, तो वीकेंड्स भी लैब में स्पेंड करते हैं। सो आई वुडंट से इट्स एन इजी जॉब। एट द एंड ऑफ द डे जब आप राइटिंग पे आते हैं तो आप पूरी पूरी रात बैठ के लिखते हैं, क्योंकि वही एक वक्त होता है जिसमें आप सुकून से लिख सकते हैं विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। दिन में लिखना इज वेरी डिफिकल्ट। आपको हार्डली कोई ऐसा रिसर्चर होगा जो कहेगा कि मैं दिन में बैठ के लिखता हूँ। सो माई टाइम यूज टू स्टार्ट वन so once I was done with my coursework and transitioning to my research work, I had my second pregnancy. So my daughter was born right before COVID लॉकडाउन्स हैड हैपेंड लाइक। और तो उस वक्त ये शेड्यूल होता था कि वो जब सो जाती थी तो आई स्टार्टेड राइटिंग। तो उसके बाद भी इट वाज ऑनगोइंग फॉर लाइक 3 years, 2.5 years, या। सो वो 2.5 years ये होता था कि जब वो बच्चे सो जाते थे दोनों, उस वक्त आई यूज्ड टू स्टार्ट राइटिंग। थैंक्स टू माय हस्बैंड हु यूज्ड टू ब्रिंग दैट हॉट glass of milk for me or a coffee or something, like, he was very supportive during that period. But yes, it is hectic. एंड स्पेशली लाइक आपने बताया कि आप रात में लिख रहे हैं, यू आर वेटिंग फॉर द चिल्ड्रन टू गो टू बेड। How difficult is it to resist the urge to actually just go to bed and not write? एक दो दिन नहीं लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? वो जो कंसिस्टेंसी है पीएचडी की, उसको uh, वो आपने कैसे डेवलप की? What were you like? What used to go in your heart and mind to be able to actually stay up every night and do the hard work that you were doing? एक दो दिन नहीं लिखेंगे तो फंडिंग खत्म हो जाएगी और घर आना पड़ेगा। सबसे बड़ी अर्ज आई थिंक यही होती है। एंड ऑल्सो द फैक्ट कि आप छोटे गोल सेट करें कि आज मैंने इतना लिखना है, 2 पेजेस लिखने हैं, 3 पेजेस लिखने हैं, दैट्स द मैक्स दैट यू कैन डू इन वन नाइट। सेकेंडली, पीएचडी कंप्लीट करने की जो एक अब, अच्छा, आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हु वुडंट थिंक अबाउट लाइक नेक्स्ट 2 years। बट अगर मैं आज जो कर रही हूँ ना वो खत्म करना ही करना है। दैट इज द मेन थिंग कि मैंने जो अभी गोल सेट किया है, आई एम जस्ट लिविंग इन द प्रेजेंट, आई हैव टू फिनिश दिस। तो वो थी कि कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ना है। पीएचडी आधी छोड़ के वापस आ गए ना, तो वही सेल्फ एस्टीम,
रिस्पेक्ट पे बात आ जानी है। एंड देन अभी आप खुद मेंशन कर रही थी अपने पीएचडी की जर्नी में कि यू जस्ट हैड योर योर सेकंड चाइल्ड, योर बेबी डॉटर, एंड देन यू वर डूइंग योर रिसर्च। आप काम कर रही हैं, आप मेहनत कर रही हैं। आई एम श्योर आप थकी भी होंगी, बट यू न्यू दैट यू हैड टू go through it, you had to go through the grind. इज्जत का मसला भी है, all of those things, and you have to do it. ये जो notions हैं कभी कभी जो औरतों से जोड़े जाते हैं, वो औरतें जो एक से ज्यादा काम कर रही होती हैं, कि जो बच्चों का भी ख्याल रख रही हैं, वो इल्म भी हासिल कर रही हैं, वो पीएचडी भी लिख रही हैं, हो सकता है आप कोई टीएशिप भी कर रहे हो, लाइक पीपल डू सो मेनी थिंग्स एट वन टाइम, वुमेन स्पेशली। ये जो नोशंस हैं जो क्रिएट किए हुए हैं कि लाइक सुपर मॉम, और women are amazing multitaskers, या औरतों में तो एक अनलिमिटेड स्ट्रेंथ होती है, वो तो कर गुजरती हैं, आदमी कंप्लेन करते हैं बट औरतें तो कर लेती हैं। आपका इस तरह के जो सेलिब्रेटरी किस्म के नोशंस हैं औरतों को लेके और औरतों की ज्यादा मेहनत को लेके, हाउ डू यू फील अबाउट देम ऑन अ पर्सनल लेवल? एक्चुअली ये जो नोशंस है ना, ये ज्यादा प्रेशर बिल्ड करते हैं हाँ। on the women to perform more. हम्म। So I would rather be like कि ना बोलो तो बेहतर है, क्योंकि एक और प्रेशर ऐड होता है कि नहीं, अच्छा, I have to maintain this thing, this राइट। phase, which is difficult. As even as women, we want to take breaks. We want to just, uh, sometimes the weekend is कि पूरा दिन सोते रहो, I don't know, मतलब लेटे रहो, just scroll हाँ, through your social media, don't do anything. So I think these notions are like kind of more adding to the pressure rather than doing any favors. राइट। तो आपके हाल में ये So स्कैम है थोड़ा, ये हमें I बेवकूफ think that बनाया जा रहा I would say that है। exactly, हाँ, exactly. Especially उसके बाद फिर कहते कि यार औरतें तो कर लेती, हमसे थोड़ी होता है ऐसे हाँ, इस तरह के काम. हाँ। So that is kind of yeah. Right, right. And do you feel like even now when you have come back to Pakistan, आप काम कर रही हैं और जब आप वहां पे भी थी, did mom guilt ever happen to you? Oh, it does many a times. Yes, it does. Quite many times I'm a single mom, single parent on weekends because my husband travels on the weekend. So I was, even this weekend I was a single mom, and leaving my kids with the nanny because I had to attend the conference. Was like, my younger one was like कि पापा भी नहीं है and आप भी जा रहे हो, मैं अकेले, मैंने कहा नहीं, just for 2 hours please. So yeah, I mean there are situations. What are some of the worst misogynist things that you have been told about yourself? So, misogyny plus the fact that going to non-conventional field, they were both going parallel with each other in the initial phase of the careers. Like, कि एक तो कैरियर भी वही नहीं करना है जो एफसीपीएस नहीं करना है, या एमएलईज नहीं करनी है. Plus the fact that you're a woman going like not sure of what's happening to your career. So वो दोनों चीजें एक साथ चल रही थी. And then when you are in an unconventional field, uh, people don't know what's happening with your career, right? Yeah. I know what's happening with my career. They don't know, and then they make you low like um, uh, you're just making haphazard decisions. आप जो कर रहे हैं, how do I put it? Like, so you were, so people's comments like, you were a top scorer at school. What happened to your career? If you take a break, what happened? So मैंने बहुत ये सुना कि if you're a top scorer at school, uh, and now you're lost with your career. I wasn't lost with my career. I was just taking a break because I needed to. Hmm. A female body works in a different way than a male body. You cannot deny that. If I need to take a break, I need to take a break. एंड देन अगर आप काम कर रहे हैं तो फिर ये सुनना कि आपको जबरदस्ती मॉम गिल्ट में डाला जा रहा है कि वर्किंग मॉम्स डोंट नीड, आई मीन, सो एट दैट अभी भी मुझे लगता है कि वर्किंग मॉम्स आर अंडर मोर प्रेशर देन सिंगल वुमेन. For sure.
for sure, वर्किंग for sure, मॉम्स को जबरदस्ती एक गिल्ट में डाला भी जाता है for रादर sure. देन अस पुटिंग इन दैट आवरसेल्व्स। हमारे बच्चे हमें पता है कि कितने रिजिलियंट हैं। Hmm. अगर वो अभी मेरी बेटी एक दिन कह भी देगी ना तो थोड़ी अच्छा मामा ठीक है आप ऑफिस जाओ, रात में फिर हम आप मेरे साथ ही कटल करके सोना। सो थिंक किड्स टू रियलाइज दैट। Hmm. बट आपको जबरदस्ती एक उस प्रेशर में डाला जाए कि यू आर Right. इग्नोरिंग योर चिल्ड्रन, यू आर बीइंग अ बैड मॉम। सो Hmm. दैट हैपेंस, वो शुरू से था, अभी भी वो शायद चल रहा है कहीं ना कहीं कि अच्छा सिर्फ एवरी अदर पर्सन इज आस्किंग यू कि बच्चे कौन संभालता है। Oh my God. Huh. दैट इज वेरी कॉमन विद वर्किंग मॉम्स आई थिंक कि Right. बच्चों का फौरन आ जाते हैं। Hmm. नाउ यू डोंट नो माय होम डायनामिक्स, you Right. don't know how things are working. Hmm. Probably you should just see the things that things are working for us. Yeah. But no, you have to have put your only everywhere. Right, right, right. I mean, yeah, it So is. I mean, it must be like a unique kind of pressure for sure. so A unique I pressure that think so the many women have to face, you know. unfortunately yes, and that is where I think these were the reasons that really wanted to achieve something rather than मेरी प्रोफेशनल कैरियर वाज लाइक ओके कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे, लेकिन Yeah. फुलब्राइट और पीएचडी क्यों करना, आई थिंक दिस वाज द ओनली रीजन आई रियली एंड आई एम ग्लैड दैट इट रियली शट दोज ऑल माउथ्स अप एज वेल। Right, right. Yeah. वरना आप आई आई हैड ऑलरेडी क्रॉस माय 30s व्हेन आई वेंट देयर। उससे पहले मैं बहुत पहले मास्टर्स स्टार्ट करने के वक्त मैंने सुना कि अब क्या जरूरत है मास्टर्स करने की, बच्चे हो गए हैं घर संभालो। आई वाज लाइक व्हाट, हाँ. there's no life, there's no end हाँ. to हाँ. your learning, हाँ. you can never stop that। और ये वो लोग हैं जो उसके बाद उन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन स्टार्ट की है once I was finishing my masters। So Wow. I'm glad हाँ. to inspire those people as well। Exactly. Yeah, I'm yeah. just I'm happy for them too। Someone else also got a good degree. That's amazing. Some other woman got it, especially. That's amazing, always. But yeah, this is truly like, I mean, it's very painful, obviously, to listen to also. Yeah, But I mean, I don't want to undermine any woman's struggles, but I would say कि married women, if they try to work, they have a harder life। hmm, hmm, नॉट बिकॉज वो अपना नहीं संभाल रही हैं, बट hmm, बिकॉज कि उनको या तो सुनने को मिल रही होगी हाँ, ऑफिस में, मॉम गिल्ट दिया जा रहा होगा, या फिर उन्हें ऑफिस में अपॉर्चुनिटीज कम मिल रही होंगी। right, right. You're इन बोथ probably, वेज कि हाँ, या कि भाई इसको ना दो ये वाला प्रोजेक्ट, ये तो घर जाके काम नहीं करेगी, या लेट नाइट नहीं, लेट सिटिंग्स नहीं करेगी। सो वी हैव टू डील विद एनी वन ऑफ द, आई डोंट वांट टू अंडरमाइन द सिंगल वुमेन्स जर्नी, लेकिन जो वर्किंग मॉम have to hmm, face that, those hmm. things are different। एंड यूर सेइंग कि जो इस तरह की एक परसेप्शंस है कि यार ये रात में जाके काम नहीं करेगी, या ये मसरूफ होगी, या इसको 2 दिन की छुट्टी चाहिए होगी, इस तरह की चीजें, यानी ये अभी भी हो रही है ना, ये एवरीडे पैसिव मिसोजिनी ये अपना मस्त चल रही है, राइट? हाँ 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 ये हाँ। कहीं नहीं गई है। मतलब आई हैड टू आंसर लाइक पीपल कि मैंने पीएचडी किया है तो वो रात को बैठ के ही किया है। राइट, राइट, तो राइट। रात को आप कैसे कह सकते हैं कि मैं नहीं बैठूंगी। मतलब आपको ही अपनी सफाई पेश करनी है कि देखिए मैं तो, एग्जैक्टली। आई मतलब डोंट हाँ, थिंक सिंगल वुमन विल फेस दिस क्वेश्चन कि हम तो रात को बैठ के काम करते हैं। right, right. I think I mean like bringing the single woman perspective into the conversation, I think मुझे इस बात से पर्सनली मुझे इस बात से चिढ़ होती है कि अम, जब हम किसी चीज पे ज्यादा मेहनत करते हैं, जैसे अगर हम रात में जाके मेहनत करें और किसी डेडलाइन को मीट करें, वर्सेस मैन हु इज वर्किंग एज हार्डर और लिटिल लेस हार्डर, तो हमें हमेशा ये कह के हमारी एक्स्ट्रा मेहनत को एक्स्ट्रा मेहनत के तौर पे कम देखा जाता है, हमारी एक्स्ट्रा मेहनत को ये कह के डिसमिस किया जाता है कि इनको तो शौक है। कि मतलब ये तो कोई फारिग नहीं है ना, कि ना इन्होंने कोई शादी हुई है अच्छा इनकी ना इंडीड। कुछ है, तो ये इतनी नहीं नहीं फारिग है कि ये रात में जाके काम करती है। इट्स लाइक नो, लाइक आई वाज अवेक बिकॉज आई वांटेड टू वर्क फॉर इट, बिकॉज आई वर्क फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, बट नो वन सीज इट। मोस्ट पीपल डोंट सी, नो वन वुड से थैंक एंड यू व्हेन लाइक। वी डू दैट, हाँ, no they won't, and when हाँ, we do it they will say कि रात को बैठ के काम करती हो तो फैमिली को टाइम कैसे देते हो। मतलब then they put you in that guilt। So हाँ, somehow or somewhere चीजें चल रही थी, and हाँ, I think it's very common, everybody has seen that कि लोग
मेजोरिटी ऑर्गेनाइजेशंस में 9 सवा 9 तक आ रहे हैं, फिर चाय ब्रेक्स हो रहे जी। हैं और फिर दोज काइंड सुट्टा ऑफ ब्रेक ब्रेक्स हो चल रही है, रहे हैं। सब कुछ हो रहा है। एग्जैक्टली। एंड देन दे डोंट रियलाइज कि अगर एक औरत आ रही है ना तो वो 8, सो आई लीव एज आई ट्राई टू लीव होम एज सून एज माई किड्स आर ऑफ टू स्कूल। ठीक है। सो कम इन अर्ली लिटिल, हाँ। ताकि जल्दी आओ या टाइम पे आप अपना काम करके निकले। उसके बीच में आप 20 मिनट्स का लंच ब्रेक लेते हैं, ऑफ कोर्स। बिकॉज आई नो कि मुझे टाइम पे खत्म करना है काम। राइट। ये रात को बैठना पड़े तो आई डोंट माइंड इट, अगर डेडलाइंस हैं, लेकिन द थिंग इज आई ट्राई टू फिनिश माय टाइम। अब यू स्टार्ट लेट एंड देन यू डू अ लेट सिटिंग डजंट जस्टिफाई माय अर्ली कमिंग एंड टेकिंग अ शॉर्ट एग्जैक्टली। ब्रेक जस्ट फॉर लंच। सो एग्जैक्टली। थिंक Because you प्रॉब्लम have इज कि two tiny dependents waiting for your arrival एग्जैक्टली to pick them up to two ten different. एग्जैक्टली सो प्रॉब्लम है कि थिंग्स वर्क डिफरेंटली फॉर बोथ ऑफ अस, लेकिन क्योंकि एक पेट्रियार्कल माइंडसेट में हम काम कर रहे हैं, सो गलत लेंस से हमें देखा जाता है। डेफिनेटली डेफिनेटली हम ही पीएचडी भी करें, हम